Hello, dear students. I hope you must have done well in your first paper. And now, guessing the questions for the upcoming paper of Indian writings in English. This is the question paper on your screen is of 2020. I know the digits, like the writing must not be clear to you, but let me make it easy for you to understand what is written. So, in first question, in unit one, there is question on Tagore's nationalism, right? There is a statement given in the question paper, और उसके light में, in the light of the statement, you have been asked to discuss how India as a civilization is significance of India as a civilization represented in Tagore's nationalism. Definitely Tagore यहाँ बात कर रहे हैं कि we are the civilization, है ना, जिसमें अतिथि देवो भव, we believe in the world is one and it's a one nest and we are the members of global family, so we are not narrow. So that's not the time like to discuss all these things, but एक क्वेश्चन आया है नेशनलिज्म से और दूसरा उसके साथ है ए मेहरोत्रा का ऐसे द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, और बड़ा बहुत ही ट्रिकी और इजी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि मेहरोत्रा यहाँ बात कर रहे हैं पार्थासारथी ने ए रामानुजन की पोइट्री का क्या असेसमेंट किया है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि he has forgotten to put focus on the emperor has no clothes in his essay. तो आपको इसको जस्टिफाई करना है. अब देखिए कैसे करेंगे ये, because he is talking of emperor has no clothes. Ironically ये टाइटल यूज करके वो ये बता रहे हैं कि कुछ ही लोगों में इतना करेज होता है जो कह सकें that emperor has no clothes. बाकी क्या कहेंगे, emperor has new clothes. पुरानी वाली वो टू रोग वीवर्स वाली स्टोरी याद करिए. नेक्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है राजा राव डीकोलोनाइजेस द वेस्टर्न नैरेटिव मोड एंड हाइलाइट्स इंडियन कथा और नैरेटिव टेक्निक इन कांथापुरा. तो यहाँ पे इंडियन नैरेटिव टेक्निक यूज करके कैसे कांथापुरा में के जरिए राजा राव डीकोलोनाइजिंग फेज में एंटर कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है. क्वेश्चन इज वेरी इजी. दूसरा क्वेश्चन है राजा राव हाइलाइट्स द रोल प्लेड बाय द पॉलिटिकल कॉन्शियस वुमेन कैरेक्टर्स. राइट, तो वुमेन कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आया है. यूनिट 3 में क्वेश्चन था 2020 में थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट एज नॉवल ऑफ वुमेन्स प्रोटेस्ट, और इसके साथ आया है हाउ गीता हरिहरन ब्लेंड्स मिथ विद रियलिटी. यूनिट 4 जो आपकी पोइट्री की यूनिट है, इसमें से क्वेश्चंस हैं डिस्कस हाउ ए.के. रामानुजन्स पोम्स prescribed for you highlight the significance of memory and relationships in Indian society. तो आप चाहे extended family ले लो, चाहे आप reflections on a great house ले लो, दोनों ही poems में he has abundantly uses relationships, right? और definitely memory तो है ही है. Then he's talking of future, he's talking of past. और इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन आया था 2020 में अरुण कलतकर्स पोम्स कौन कौन सी हैं, मीरा एंड नक्कल बोन्स. प्रिस्क्राइब फॉर यू इवोक द करुणा रस, राइट. सो इंडियन एस्थेटिक से ये टर्म ली गई है करुणा रस, कि आपको बहुत दया आ रही है, आप पिटी से भर रहे हो अंदर से, उसके ऊपर कमेंट करना है. और सिमिलरली यूनिट 5 जो है आपका फाइनल सॉल्यूशंस, उसमें से क्वेश्चन आया है इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, जेंडर एंड नेशन, और दूसरा क्वेश्चन है करेक्टराइजेशन ऑफ दक्षा एंड हार्दिका. सिग्निफिकेंस कि दक्षा और हार्दिका एक ही करेक्टर है, कौन सा करेक्टर है वो आप सबको पता है, तो क्या सिग्निफिकेंस है, हाउ शी हैज बीन डिपिक्टेड एज दक्षा एंड हार्दिका एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. सो दैट वाज द पेपर इन 2020. In 2021 the paper had these questions. First question was Tagore's ideas of nationalism are defined by Indian values of coexistence. So this is Indian civilization where we believe in unity in diversity, we believe in coexistence, we believe in multiculturalism. And along with it, instead of A.K. Mehrotra, this time you people were asked about Amit Chaudhary traces the evolution of Indian English literature. तो Indian English literature का evolution, right? कहाँ से birth और growth हुई है उसकी, उसके बारे में पूछा है. From Kanthapura, the question was, is Kanthapura an idealized literary imagination of how India's national struggle for independence ought to have been? Write your own
arguments. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज राजा राव इंडियनाइज द फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन टंग इन हिज नॉवल कांतापुरा, और इस कॉन्टेक्स्ट में nothing is comparable to the preface he has written in this novel. So that is going to answer each and everything. Then in next unit from Geeta Hariharan's, is Thousand Faces of Night a feminist rendering? So you have to discuss this particular novel as a feminist study, and again use of mythology. Next in the unit where you have three poets. Modern Indian English poetry is an experimental laboratory of images, turn of phrase and hybrid idioms. तो यहाँ पे attempt an illustrative essay with reference to all the three combined answer आया है तीनों poets Ramanujan, Arun Kolatkar and Agha Shahid Ali. How do modern Indian poets combine their personal experiences with national past and mythical ancestry? So it is very obvious, बहुत ही common और straightforward question पूछे गए हैं. Mahesh Tatani's play Final Solution brings forth the limitations of politics of communalism. और दूसरा है title Final Solution. This Final Solution refers to the final solution of Hitler, that how he started, killing people in order to have the peace and everything. So this is not the time to discuss what is to be right. I just want to tell you on the basis of these questions what is going to be there in the paper and what can be expected. So what about 2022 now? In 2022, the first question was set from nationalism, Tagore's nationalism. Tagore proposed a highly philosophical form of nationalism for India, and you have to write answer on this. And second option was Amit Chaudhary traces evolution of Indian English drama as a vital interaction between modernity and vernacular literatures and languages. So Mehrotra and Amit Chaudhary. So I think this time you'll have AK Mehrotra along with Tagore. Right. So second question is style of prose fiction. So what is the style? कैसे लिखा गया है? I am receiving number of requests to share my PDFs of Kanthapura with you all. So things have been mentioned there. जो पूछा गया उसको थोड़ा elaborate कर देना. But otherwise, that is a very safe answer. Does Raja Rao's Kanthapura reflect Gandhian spiritualism? Definitely, Kanthapura is a Gandhian epic. Then, is The Thousand Faces of the Night a feminist rendering of a woman caught between tradition and modernity? तो कैसे वो फंसी हुई है, कैसे जो देवी है वो modernized है, but still she has to bow down before the tradition and all. So क्या survive कर सकते हैं हम tradition से टूट के या नहीं? So that is that's what you are going to answer. फिर यूज ऑफ माइथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका. कैसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है, कैसे हर एक मॉडल सिखाने के लिए दादी एक स्टोरी चूज कर रही हैं और उन स्टोरीज का सिग्निफिकेंस क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी of images, turn of phrases, ये सब. And then how do modern Indian poets combine their personal and these past? ये so this is seemingly very similar and to the previous one. फिर Mahesh Tatani's play Final Solution brings forth the limitations of politics of communalism through a deft exposure of contradiction in characters or meaning of title of Final Solution. So I think there might be some mistake in these because these have been found online. But otherwise, all the units are safer. Definitely, Final Solution is you'll have a straightforward question. In every unit you'll have, rather, the only two units which are tricky and where you can have you will have to read everything given. They are the units that have these poets and the essays, because you have three writers, three poets in each of them. तो उनको थोड़ा सा डिटेल में रीड जरूर करके जाइएगा ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो. So good luck, all the very best.